passenger trains, resulting in safety and higher travel speed for passengers. Together with dedicated freight corridors, these three economic corridor programs will accelerate our GDP growth and reduce logistic costs. "40,000 normal rail bogies will be converted to Vande Bharat standards to enhance safety, convenience, and comfort of passengers." Aviation sector. The aviation sector has been galvanized in the past 10 years. Number of airports have doubled to 149. Rollout of air connectivity to Tier 2 and Tier 3 cities under UDAN scheme has been widespread. 517 new routes are carrying 1.3 crore passengers. Indian carriers have proactively placed orders for over 1,000 new aircrafts. Expansion of existing airports and development of new airports will continue expeditiously. Metro and Namo Bharat. We have a fast expanding middle class and rapid urbanization is taking place. Metro rail and Namo Bharat can be the catalyst for the required urban transformation. Expansion of these systems will be supported in large cities, focusing on transit-oriented development. Green energy. Towards meeting our commitment for net zero by 2070, the following measures will be taken. Viability gap funding will be provided for harnessing offshore wind energy potential for initial capacity of 1 gigawatt. Coal gasification and liquefaction capacity of 100 metric tons will be set up by 2030. This will also help in reducing imports of natural gas, methanol, and ammonia. Phased mandatory blending of compressed biogas in compressed natural gas for transport and piped natural gas for domestic purposes will be mandated. Financial assistance will be provided for procurement of biomass aggregation machinery to support collection. Electric vehicle ecosystem. Our government will expand and strengthen the e-vehicle ecosystem by supporting manufacturing and charging infrastructure. Greater adoption of e-buses for public transport networks will be encouraged through payment security mechanism. Biomanufacturing and biofoundry. For promoting green growth, a new scheme of biomanufacturing and biofoundry will be launched. This will provide environment-friendly alternatives such as biodegradable polymers, bioplastics, biopharmaceuticals, and bioagri inputs. This scheme will also help in transforming today's consumptive manufacturing paradigm to the one based on regenerative principles. Blue Economy 2.0. For promoting climate resilient activities for Blue Economy 2.0, a scheme for restoration and adaptation measures and coastal aquaculture and mariculture with integrated and multi-sectoral approach will be launched. Comprehensive development of tourist centers. The success of organizing G20 meetings in 60 places presented diversity of India to global audience. Our economic strength has made the country an attractive destination for business and conference tourism. Our middle class also now aspires to travel and explore.
Tourism, including spiritual tourism, has tremendous opportunities for local entrepreneurship. States will be encouraged to take up comprehensive development of iconic tourist centers, branding and marketing them at global scale. A framework for rating of the centers based on quality of facilities and services will be established. Long-term interest-free loans will be provided to states for financing such development on matching basis. To address the emerging fervor for domestic tourism, Honorable Speaker, sir, projects for port connectivity, tourism infrastructure, and amenities will be taken up on our islands, including Lakshadweep. This will help in generating employment also. Promoting investments. The FDI inflow during 2014 to 23 was $596 billion US, marking a golden era. That is twice the inflow during 2005 to 14. For encouraging sustained foreign investment, we are negotiating bilateral investment treaties with our foreign partners in the spirit of First Develop India. FDI is First Develop India. Reforms in the states for Vikasit Bharat. Many growth and development enabling reforms are needed in the states for realizing the vision of Vikasit Bharat. A provision of 75,000 crore rupees as 50-year interest-free loan is proposed this year to support those milestone-linked reforms by the state governments. Societal changes. The government will form a high-powered committee for an extensive consideration of the challenges arising from fast population growth and demographic changes. The committee will be mandated to make recommendations for addressing these challenges comprehensively in relation to the goal of Vikasit Bharat. Amrit Kal as Kartavya Kal. Our government stands committed to strengthening and expanding the economy with high growth and to create conditions for people to realize their aspirations. Honorable Prime Minister, in his Independence Day address to the nation in the 75th year of our Republic, said, and I quote, "We commit ourselves to national development with new inspirations, new consciousness, new resolutions as the country opens up immense possibilities and opportunities. It is our Kartavya Kal." Unquote. Every challenge of the pre-2014 era was overcome through our economic management and our governance. These have placed the country on a resolute path of sustained high growth. This has been possible through right policies, true intentions, and appropriate decisions. In the full budget in July, Honorable Speaker, our government will present a detailed roadmap for our pursuit of Vikasit Bharat. Revised estimates. Revised estimates of 2023-24. The revised estimate of the total receipts other than borrowings is 27.56 lakh crores of rupees, of which the tax receipts are 23.24 lakh crore rupees. The revised estimate of total expenditure is 44.90 lakh crore rupees. The revenue receipts at 30.03 lakh crore rupees are expected to be higher than the budget estimate, reflecting strong growth momentum and formalization in the economy. The revised estimate of the fiscal deficit is 5.8% of GDP.
improving on the budget estimate notwithstanding moderation in the nominal growth estimates. Budget estimates for 2024-25. Coming to the year 2024-25, the total receipts other than borrowings and total expenditure are estimated at 30.80 and 47.66 lakh crore rupees respectively. The tax receipts are estimated at 26.02 lakh crore rupees. The scheme of 50-year interest-free loan for capital expenditure to states will be continued this year with an outlay of 1.3 lakh crore rupees. We continue on the path of fiscal consolidation, as announced in my budget speech of 2021-22, to reduce fiscal deficit below 4.5% by 25-26. The fiscal deficit in 2024-25 is estimated to be 5.1% of GDP, adhering to that path. So the gross and net market borrowings through dated securities during 24-25 are estimated at 14.13 lakh crore rupees and 11.75 lakh crore respectively. Both will be less than that in 23-24. Now that the private investments are happening at scale, the lower borrowings by the central government will facilitate larger availability of credit for the private sector. Vote on account. I'll be seeking vote on account approval of the Parliament through the appropriation bill for a part of the financial year 2024-25. I will now move to Part B. Honorable Speaker, sir, over the last 10 years, the direct tax collections have more than trebled and the return filers swelled 2.4 times. I would like to assure the taxpayers that their contributions have been used wisely for the development of the country and welfare of its people. I appreciate the taxpayers for their continued support. The government has reduced and rationalized tax rates. Under the new tax scheme, there is now no tax liability for taxpayers with income up to 7 lakh rupees, up from 2.2 lakh rupees in the financial year 2013-14. The threshold for presumptive taxation for retail businesses was increased from 2 crores to 3 crores. Similarly, the threshold for professionals eligible for presumptive taxation was increased from 50 lakh rupees to 75 lakh rupees. Also, corporate tax rate was decreased from 30% to 22% for existing domestic companies and to 15% for certain new manufacturing companies. Honorable Speaker, sir, in the last 5 years, our focus has been to improve taxpayer services. The age-old jurisdiction-based assessment system was transformed with the introduction of faceless assessment and appeal, thereby imparting greater efficiency, transparency, and accountability. Introduction of updated income tax returns, a new Form 26AS, and pre-filling of tax returns simpler and easier. Average processing time used from 93 days in the year 2013-14 to thereby making refunds faster. Indirect taxation. By unifying the highly fragmented indirect tax regime in India, the GST has reduced the compliance burden on trade and industry. The industry has acknowledged the benefits of GST. According to a recent survey conducted by a leading consulting firm, 94% of industry leaders view the transition to GST
as largely positive. According to 80% of the respondents, it has led to supply chain optimization, as elimination of tax arbitrage and octroi has resulted in disbanding of checkposts at the state and city boundaries. At the same time, tax base of GST more than doubled, and the average monthly gross GST collection has almost doubled to 1.66 lakh crores this year. States too have benefited. States' SGST revenue, including compensation released to states in the post-GST period of 2017-18 to 2022-23, has achieved a buoyancy of 1.22. In contrast, the tax buoyancy of state revenues from subsumed taxes in the pre-GST four-year period of 2012-13 to 2015-16 was a mere 0.72. The biggest beneficiaries are consumers, as reduction in logistic cost and taxes have brought down prices of most goods and services. We have taken a number of steps in customs to facilitate international trade. As a result, the import release time declined by 47% to 71 hours at inland container depots, by 28% to 44 hours at air cargo complexes, and by 27% to 85 hours at seaports over the last 4 years since 2019, when the national time release studies were first started. Tax proposals. As for tax proposals, in keeping with the convention, I do not propose to make any changes relating to taxation and propose to retain the same tax rates for direct and indirect taxes, including import duties. However, certain tax benefits to startups and investments made by sovereign wealth or pension funds, as also tax exemption on certain income of some IFSC units, are expiring on 31/3/2024. To provide continuity in taxation, I propose to extend the date to 31/3/2025. Moreover, in line with the government's vision to improve ease of living and ease of doing business, I wish to make an announcement to improve taxpayer services. There are a large number of petty, non-verified, non-reconciled, or disputed direct tax demands, many of them dating as far back as 1962, which continue to remain on the books, causing anxiety to honest taxpayers and hindering refunds of subsequent years. Honorable Speaker, sir, I propose to withdraw such outstanding direct tax demands up to 25,000 rupees pertaining to the period up to financial year 2009-10 and up to 10,000 rupees for financial years 2010-11 to 2014-15. This is expected to benefit about 1 crore taxpayers. 1 crore taxpayers would benefit out of this. Economy then and now. In 2004, reigns the responsibility to mend the economy step by step and to put the governance systems in order was enormous. The hour was to give hope to the people, to attract investments, and to build support. The government did that successfully, following a strong belief of nation first. The crisis of those years has been overcome, and the economy has been put firmly on a high, sustainable growth path with all-round development. It is now appropriate
to look at where we were then. I repeat, it is now appropriate to look at where we were then till 2014 and where we are now, only for the purpose of drawing lessons from the mismanagement of those years. The government will lay a white paper on table of the House. The exemplary track record of governance, development and performance, effective delivery and Jan Kalyan has given the government trust, confidence and blessings of the people to realize whatever it takes. The goal of Vikasit Bharat with good intentions, true dedication and hard work in the coming years and decades. With this, Honorable Speaker, I commend the interim budget to this august House. Jai Hind. आइटम नंबर 2 श्रीमती निर्मला सीतारमण जी। So, with your permission, I rise to lay on the table the following statements under Section 3(1) of the Fiscal Responsibility and Budget Management Act 2003, Medium-Term Fiscal Policy cum Fiscal Policy Strategy Statement and Macroeconomic Framework Statement. आइटम नंबर 3 श्रीमती निर्मला सीतारमण जी। Sir, with your permission, I rise to move for leave to introduce the Finance Bill 2024. प्रश्न ये कि विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष हुआ, हाँ वालों के पक्ष हुआ। माननीय मंत्री जी विधेयक को पुनर्स्थापित करें। Sir, I introduce the bill. सभा की कार्रवाई शुक्रवार दिनांक 2 फरवरी 2024 को प्राप्त 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वैशाली और आप देख रहे हैं चाणक्य न्यूज इंडिया। आइए अब बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। गुना जिले के धरनावदा थाना क्षेत्र की झागर चौकी के अंतर्गत बड़े पैमाने पर जुआ का फड़ संचालित हो रहा था। गुना जिले के धरनावदा थाना क्षेत्र के झागर चौकी अंतर्गत बड़े पैमाने पर जुआ का फड़ संचालित हो रहा था। इसकी सूचना मिलने पर पुलिस ने छापामार कार्रवाई कर 6 जुआरियों सहित 1,42,300 रुपए नगद, 5 मोबाइल और 3 बाइक बरामद की। इस जुआ की कार्रवाई में बड़ी बात यह है कि पुलिस के प्रेस नोट में जुआ की रकम, पकड़े गए सामान की पूरी डिटेल है, लेकिन जुआ खेल रहे सभी 6 जुआरियों के नाम जारी नहीं किए गए। जबकि अभी तक जुआ के जो भी प्रेस नोट पुलिस विभाग के द्वारा जारी होते हैं उनमें सभी जुआरियों के नाम, पिता सहित, पते सहित जारी किए जाते हैं। इस मामले में जारी नहीं किए गए। धरनावदा थाना प्रभारी उप निरीक्षक राजेंद्र सिंह चौहान के नेतृत्व में जिले की झागर चौकी पुलिस टीम द्वारा थाना क्षेत्र में ग्राम एंदवाड़ा की टगर में बड़े पैमाने पर जुआ खेले जाने की सूचना पर कार्रवाई करते हुए जुए के फड़ से जुआ खेलते हुए 6 जुआरियों को पकड़ा, जिनके कब्जे में से 1,42,300 रुपए नकदी, 5 मोबाइल व 3 बाइकों को बरामद किया गया। पकड़े गए सभी जुआरियों के विरुद्ध धरनावदा थाने में 13 जुआ एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर वैधानिक कार्रवाई की गई। चाणक्य न्यूज इंडिया से गुना से अतुल शर्मा की रिपोर्ट। खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले, बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। चाणक्य न्यूज इंडिया, हम हैं हिंदुस्तानी।
नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वैशाली और आप देख रहे हैं चाणक्य न्यूज इंडिया। आइए अब बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। जमकर सजती है दिन रात जुए की फड़, कहीं सरसों के खेत में तो कहीं नदी के किनारे सजती है जुए की फड़। आखिर क्यों अनजान बनी रहती है सिटी चौकी पुलिस। इस वक्त की बड़ी खबर प्रतापगढ़ से आ रही है, जहां जमकर सजती है दिन रात जुए की फड़, कहीं सरसों के खेत में तो कहीं नदी के किनारे सजती है जुए की फड़। आखिर क्यों अनजान बनी रहती है सिटी चौकी पुलिस। जुए की फड़ को लेकर बीट सिपाही की भूमिका संदिग्ध। बड़ा सवाल, क्या बीट सिपाही के संरक्षण में चलता है जुए का फड़। पूरा मामला कोतवाली देहात के सिटी चौकी अंतर्गत कारीघाट के पास का है। चाणक्य न्यूज इंडिया के लिए प्रतापगढ़ से डॉक्टर RR पांडे की रिपोर्ट। खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। चाणक्य न्यूज इंडिया, हम हैं हिंदुस्तानी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वैशाली और आप देख रहे हैं चाणक्य न्यूज इंडिया। आइए अब बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। ऐतिहासिक लोकसभा क्षेत्र के फूलपुर के ग्राम सभा खोदाईपुर में समाजवादी पीडीए पखवाड़ा का आयोजन किया गया। समाजवादी पार्टी के निर्देश के क्रम में मंगलवार को यूपी प्रयागराज के फूलपुर लोकसभा क्षेत्र के ग्राम सभा खोदाईपुर बबूरिया चौराहे में पीडीए पखवाड़ा का आयोजन किया गया, जिसमें सरकार की जन विरोधी कार्यक्रम, बेरोजगारी, जातिगत जनगणना, पीडीए पर विस्तार से चर्चा हुई। इस दौरान लोकसभा चुनाव में गरीबों, पिछड़ों, दलितों, अल्पसंख्यक साथियों को बराबरी का हक, रोजगार दिलाने के लिए समाजवादी पार्टी के भारी मतों से जिताने का संकल्प लिया। इस दौरान सपा के पूर्व विधायक मोहम्मद मुस्तफा सिद्दीकी ने कहा कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी देश के इकलौते नेता हैं जो समाज के उपेक्षित वर्गों, गरीबों, किसानों, पिछड़ों, दलितों, अल्पसंख्यक महिलाओं की लड़ाई मजबूती से लड़ रहे। नीतीश के सवाल पर कहा कि नीतीश कुमार के महागठबंधन से निकल जाने पर महागठबंधन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। महागठबंधन कई पार्टियों से मिलकर बना है, किसी एक के निकल जाने से गठबंधन फेल नहीं होता। इसी मौके पर जिला महासचिव श्री राम सुमेरपाल ने कहा कि सत्ताधारी बीजेपी संविधान और आरक्षण को खत्म करना चाहती है। बीजेपी देश को गुलामी की ओर ले जाना चाहती है। इसी मौके पर मौजूद लोग जिला सचिव श्री राजकुमार पटेल, श्री जगदीश मौर्य, धाराचंद भारतीय, कमलचंद गायन, अवधेश नारायण यादव, महाबली डॉक्टर ईश्वर चंद, गुलाब यादव, महेंद्र, जिला पंचायत सदस्य बेला सिंह, सपा ब्लॉक अध्यक्ष रमेश भारतीय ने संचालन किया तथा अध्यक्षता शकील इस्माइल ने की। चाणक्य न्यूज इंडिया के लिए फूलपुर से हरफुल यादव की रिपोर्ट। चालू हो गया उधर देखिए। आज ऐतिहासिक क्षेत्र लोकसभा फूलपुर के ग्राम सभा खोदाईपुर में समाजवादी पीडीए पखवाड़ा का आयोजन किया गया है। इसी पीडीए पखवाड़ा के उपलक्ष्य में हमारे बीच में मौजूद है समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक मुस्तफा सिद्दीकी जी। इनसे पूछते हैं पीडीए पखवाड़ा जो है जनता के बीच में आप क्या संदेश देना चाह रहे हैं। जनता के बीच में हम ये संदेश देना चाहते हैं कि पीडीए यानी पिछड़ा वर्ग, दलित और अल्पसंख्यक, ये तीनों एकजुट हो जाएं। इनकी आबादी 85% है और जब हम 85% एकजुट हो जाएंगे निश्चित रूप से इन्हीं में से कोई आदमी प्रधानमंत्री बनेगा, कोई मुख्यमंत्री बनेगा। और जब तक हम लोग एकजुट नहीं होंगे, उनको जोड़ने का काम करने के लिए हम लोगों ने पीडीए कार्यक्रम किया और उनके जो कार्य आज हो रहा है उसके बारे में बताने का काम किया। पीडीए को एकत्र करने के लिए आपका क्या मुद्दा होना चाहिए। आज की महंगाई है, बेरोजगारी है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वैशाली और आप देख रहे हैं चाणक्य न्यूज इंडिया। आइए अब बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। महोबा जनपद के पनवाड़ी में सराफा व्यापारी के साथ लूट एवं हत्या के मामले में करीब एक सप्ताह बीत जाने के बाद भी हत्यारों का खुलासा न होने से जिले भर के सराफा तथा अन्य व्यापारियों में आक्रोश पनपना शुरू हो गया है। महोबा जनपद के पनवाड़ी में सराफा व्यापारी के साथ लूट एवं हत्या के मामले में करीब एक सप्ताह बीत जाने के बाद भी हत्यारों का खुलासा न होने से जिले भर के सराफा तथा अन्य व्यापारियों में आक्रोश पनपना शुरू हो गया। चरखारी के सराफा व्यापारी ने जिला अधिकारी को ज्ञापन भेजते हुए हत्या का शीघ्र खुलासा न होने पर
आंदोलन की चेतावनी दी है। बताते चले कि बदमाशों ने पनवाड़ी के सराफा व्यापारी अजय कांत सोनी के साथ 25 जनवरी को उनके ही आवास पर लूट की घटना को अंजाम दिया। साथ ही विरोध करने पर असलाहा से फायर करते हुए उन्हें घायल कर दिया गया। गंभीर रूप से घायल व्यापारी की इलाज के दौरान 27 जनवरी को दर्दनाक मौत हो गई थी। सराफा व्यापारी की हत्या एवं लूट का खुलासा न होने से पनवाड़ी सहित पूरे जिले के व्यापारियों में आक्रोश है। इसी क्रम में मंगलवार को चरखारी सहित पूरे जनपद के सराफा व्यापारियों ने व्यापार मंडल के बैनर तले अपने अपने प्रतिष्ठान बंद करते हुए विरोध प्रदर्शन करते हुए जिलाधिकारी को संबोधित ज्ञापन एसडीएम चरखारी डॉक्टर प्रदीप कुमार को सौंपते हुए वारदात के खुलासे व लूट के मामले की बरामदगी तथा परिवार की सुरक्षा की मांग की। व्यापार मंडल अध्यक्ष आनंद स्वरूप दमेले ने भी सराफा व्यापारी की हत्या व लूट के मामले का खुलासा न होने पर नाराजगी व्यक्त की तथा कहा कि इस तरह की घटना से व्यापारियों में असुरक्षा एवं भय पैदा हुआ है। उन्होंने कहा कि आज सराफा व्यापारियों द्वारा प्रदर्शन किया गया और अगर न्याय नहीं मिलता तो व्यापार मंडल भी विरोध प्रदर्शन करने के लिए बाध्य होगा। ज्ञापन सौंपे जाने के दौरान नीरज सोनी, नीलेश सोनी, अनिल सोनी, रजनीश गुप्ता, रामजी सोनी, राहुल बड़ोनिया, अरविंद सोनी सहित सराफा संगठन एवं व्यापार मंडल चरखारी के पदाधिकारी मौजूद रहे। चाणक्य न्यूज इंडिया से महोबा से प्रदीप पंसारी की रिपोर्ट। किस संबंध में आज उप जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है, क्या पूरा प्रकरण है? 25 तारीख को हमारे यहाँ ये घटना हुई है पनवाड़ी में। अजय कांत सोनी जी हैं ज्वेलर्स, वो दुकान बंद करके जा रहे थे। शाम को लगभग 6 साढ़े 6 का समय था। तो अपने घर से कुछ ही दूरी रह गई थी उनकी कि अचानक कुछ हमलावर थे जिन्होंने उनका बैग छीनने की कोशिश की। में मारपीट उन्होंने गोली मार दी उसको और जैसे ले गए इसको इलाज के लिए, तो झांसी में इसकी मृत्यु हो गई 27 तारीख को। अब अभी तक घटना का खुलासा नहीं हो पाया, जबकि हमारे जिलाध्यक्ष जी मिले थे तो एसपी महोदया ने 4 दिन का समय मांगा था कि 4 दिन के अंदर हम इस वारदात को खोल देंगे, लेकिन अभी तक उस चीज़ में हम लोगों को संतोषपूर्ण प्रगति नहीं समझ में आ रही है। इसलिए हम चाहते हैं कि एक बार जिला प्रशासन के माध्यम से, अपने तहसील प्रशासन के माध्यम से, जिला प्रशासन के माध्यम नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वैशाली और आप देख रहे हैं चाणक्य न्यूज इंडिया। आइए अब बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। सीएमओ कार्यालय सभागार में मंगलवार को मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संतोष गुप्ता ने महात्मा गांधी की पुण्यतिथि को कुष्ठ निवारण दिवस के रूप में मनाया। सीएमओ कार्यालय सभागृह में मंगलवार को मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संतोष गुप्ता ने महात्मा गांधी की पुण्यतिथि को कुष्ठ निवारण दिवस के रूप में मनाया। नगर पालिका अध्यक्ष डॉक्टर ईरा श्रीवास्तव ने कर्मचारियों को जिला अधिकारी का संदेश पढ़कर सुनाया। जिला कुष्ठ अधिकारी डॉक्टर रामकिशन ने बताया कि जिले को कुष्ठ रोग मुक्त बनाने के लिए 30 से 13 फरवरी तक स्पर्श कुष्ठ जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। इसमें कुष्ठ विभाग के कर्मचारी, सीएचओ, एएनएम एवं आशा कार्यकर्ता लोगों को इस बीमारी के बारे में जानकारी देंगे तथा लोगों को जागरूक करेंगे। साथ ही भ्रांतियों को दूर किया जाएगा। प्रचार प्रसार के दौरान कुष्ठ रोगी मिलने पर एमडीटी द्वारा निःशुल्क इलाज मुहैया करवाया जाएगा। उन्होंने बताया कि कुष्ठ बीमारी माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री नामक जीवाणु से होती है। इसमें त्वचा पर हल्के रंग के दाग धब्बे, जिनमें सूखापन एवं सुन्नपन हो जाता है। हाथ पैरों में झुंझुनी, जलन या कमजोरी आने से वस्तुएं पकड़ने या उठाने में परेशानी होती है। शरीर में कहीं पर त्वचा लाल और मोटी होने, उसमें सूजन या फिर छोटी छोटी गांठें होने पर स्वास्थ्य केंद्र पर संपर्क करें। कुष्ठ रोग इलाज से ठीक हो सकता है। इस साल का थीम है भेदभाव का अंत करे, सम्मान गले लगाए। इससे पहले राष्ट्रपति महात्मा गांधी के चित्र पर माल्यार्पण किया गया तथा 2 मिनट का मौन रखा गया। इस अवसर पर डॉक्टर एसपी मिश्रा, डॉक्टर धनीराम, डॉक्टर लालजी पासी, अनिल कुमार, डॉक्टर हरिकृष्ण, डॉक्टर मनीष रस्तोगी, धनेश पांडे सहित अन्य लोग मौजूद रहे। चाणक्य न्यूज इंडिया से लखीमपुर खीरी से पीयूष प्रताप सिंह की रिपोर्ट। सर, आपका परिचय? मुझे यहाँ जिला कुष्ठ अधिकारी की तरह तैनात किया गया है। मेरा नाम डॉक्टर रामकिशन है। सर, आप कहाँ आए हैं आज? आज हम ये हाथीपुर में हमारा जो कुष्ठ आश्रम है, इसमें यहाँ आए हुए हैं जहाँ हमारे कुष्ठ रोगी रहते हैं। आज क्या मनाया जा रहा है? आज हमारा ये स्पर्श जागरूकता कुष्ठ अभियान की शुरुआत है, जो आज 30 जनवरी से और 13 फरवरी तक चलेगा। इसमें हम लोगों को पूरे ज़िले में हर एक ग्राम सभा तक पहुंचकर ये जागरूकता फैलानी है
कि कुष्ठ रोग साध्य है, ये दवाओं से ठीक हो सकता है। ये जैसे टीबी की बीमारी है और बीमारी होती है, ये सभी दवाओं से ठीक हो सकता है। और विशेष रूप से कुष्ठ के बारे में मैं एक बात कहना चाहूँगा कि अगर इसमें जो दवा है हमारी रिफाम्सिन आर्सिन जिसे कहते हैं, उसकी अगर एक खुराक दे दी जाए तो 99.9% जो उसके जीवाणु होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, वो अगले 48 घंटे में पूरी तरह से मर जाते हैं। तो ये किसी को भी जो इन लोगों के साथ में रहता है या इनको साथ में रखता है या इनके साथ रहता है, उसको किसी को ये बीमारी होने की संभावना लगभग नहीं बल्कि पूरी 100% शून्य है। आप जो है आज क्या संदेश देना चाहेंगे आम नागरिकों आज हम को? संदेश देना चाहेंगे कि हमारे जितने भी कुष्ठ रोग से पीड़ित व्यक्ति हैं, इनको समाज की मुख्य धारा में जोड़ के और इन लोगों के साथ उसी तरह का व्यवहार किया जाए जैसे बाकी के सभी आम इंसानों के साथ करते हैं हम, और इनके परिवार के साथ भी उसी तरह का व्यवहार हो। और ये समाज के लिए और इन लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। इस साल का थीम क्या है सर? ये इस बार का थीम है हमारा जो भेदभाव का अंत करें, ससम्मान गले लगाएं। बहुत खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर, खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। चाणक्य न्यूज इंडिया, हम हैं हिंदुस्तानी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वैशाली और आप देख रहे हैं चाणक्य न्यूज इंडिया। आइए अब बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। भिंड जिले के गोहा थाना के अंतर्गत बंधा बरतरा रोड पर चल रहा जुआ का फड़ मुखबिर की सूचना पर गोहद एसडीओपी सौरभ कुमार एवं गोहद टीआई राजेश शर्मा एवं पुलिस बल के साथ दबिश दी तो 12 लोगों को 1,97,000 नकद और 10 ताश की गड्डी और मोबाइल मिले गए। भिंड जिले की गोहद थाना अंतर्गत बंदा बरतरा रोड पर चल रहा जुए का फड़ मुखबिर की सूचना पर गोहद एसडीओपी सौरभ कुमार एवं गोहद टीआई राजेश शर्मा एवं पुलिस बल के साथ दबिश दी तो 12 लोगों को 1,97,000 नकद और 10 ताश की गट्टी और मोबाइल मिले। पकड़े गए आरोपी जाहिर खान पुत्र अली हसन उम्र 25 साल निवासी आपा की तकिया वार्ड क्रमांक 2 गोहद, उमाशंकर पुत्र सुदामा लाल उम्र 55 वर्ष ग्राम बहुआ थाना महगांव, अजय कुशवाहा पुत्र दाताराम कुशवाहा उम्र 30 वर्ष निवासी वार्ड क्रमांक 12 छेकूर वाले हनुमान जी मंदिर, कमल बाथम पुत्र नारायण बाथम उम्र 55 वर्ष बरथरा रोड गोहद, रिंकू बाथम पुत्र शिवचरण बाथम उम्र 24 साल निवासी वार्ड क्रमांक 2 पंचमपुरा गोहद, किशोर प्रसाद शर्मा पुत्र शिव नारायण शर्मा उम्र 50 वर्ष बिरखड़ी, ब्रजमोहन जाटव पुत्र मोहर सिंह उम्र 26 साल निवासी किरतपुरा, प्रदीप उर्फ पंचम पुत्र कमलेश सिंह जाटव 23 वार्ड क्रमांक 17, श्याम सोनी पुत्र सुरेश चंद्र सोनी उम्र 40 वर्ष निवासी कोंच जालून, बंटी और सत्य प्रकाश शर्मा पुत्र रमेश शर्मा उम्र 36 वर्ष निवासी खनेता, जिसमें 2 आरोपी छत से कूदे तो कुछ चोटें आई। घायल राहुल राठौर, बालकृष्ण उचाड़िया। चाणक्य न्यूज इंडिया के लिए गोहद से पवन राजौरिया की रिपोर्ट। गोहद में आज जो कार्रवाई की गई है उसके बारे में सर जानकारी दें। आज मुखबिर द्वारा सूचना मिली है जिसके आधार पे थाना प्रभारी साहब शर्मा जी और बाकी अन्य जो है फोर्स के साथ जो है 2 टीमें बनाई गई थी और दोनों टीमों के द्वारा जो होता है आरोपी गुड्डू बाथम है, गुड्डू बाथम के घर पे जो है जुआ खेलने की जो है सूचना मिल रही थी। उसी संदर्भ में जो है हम लोगों ने 2 टीमें बना के दबिश दी। जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं चाणक्य न्यूज इंडिया लाइव टीवी। मैं हूं आपके साथ अंकिता। आइए बढ़ते हैं आज की प्रमुख खबरों की तरफ। आज गया के पहासवर में नवनियुक्त स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार, बिहार सरकार का भाजपा उत्तरी मंडल अध्यक्ष शंभू यादव की अध्यक्षता में भव्य स्वागत किया गया। इस मौके पर कई मंडल के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता गण शामिल हुए। माननीय मंत्री जी को फूल मालाओं से स्वागत किया। आज के इस कार्यक्रम में सभी कार्यकर्ता काफी उत्साहित दिखे गए। सरकार आ गई पूरे बिहार के कार्यकर्ताओं में, आम जनों में खुशी की लहर जाकर से 2020 में बिहार की जनता ने
हमें जनादेश दिया था, मैंडेट दिया था और इस समय सरकार हम बनाए थे, यदि भाजपा एनडीए में सरकार बनाने का काम किया। हाल के दिनों में कई कारणों से हम अलग हो गए, फिर जो सरकार बनी है बिहार के लिए एक बेहतर कदम जा करते हैं। नीतीश कुमार जी ने ऐसा प्रस्ताव दिया था, भारतीय जनता पार्टी को दिया था कि माननीय प्रधानमंत्री माननीय नड्डा साहब ने स्वीकार करके और हम तमाम लोग केंद्र का फैसला हुआ, इसका हम स्वागत किया है और बिहार में सरकार हो गई है। दिल्ली में हमारी सरकार है और बिहार में सरकार हमारी है, दोनों सरकार मिलकर बिहार के विकास की गति को तेज करेंगे। आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी का जो सपना है आत्मनिर्भर भारत, विकसित भारत, उस सपनों को हम समझकर साकार करने का काम करेंगे। कार्यकर्ताओं से अपील किया है बस कुछ महीने के अंदर लोकसभा का चुनाव का ऐलान। चाणक्य न्यूज इंडिया के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं चाणक्य न्यूज इंडिया लाइव टीवी। मैं हूं आपके साथ अंकिता। आइए बढ़ते हैं आज की प्रमुख खबरों की तरफ। श्री 1000